So hello everyone. So today we will discuss about formula based prompting. हम जो फॉर्मूला है वो प्रॉम्प्ट बेस में भी यूज कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा A+B इक्वल सी हम लोग कभी कभी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना है इस प्रॉम्प्टिंग अंदर। तो उससे क्या है कि हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि डिपेंडेंट रहते हैं उस पे, तो हम लोग को वहां पे इस तरीके के फॉर्मूला बेस्ड प्रॉम्प्टिंग को यूज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो जैसा कि जब हम मैथमेटिक्स B=C जब हम यूज करते हैं, तो इसी तरीके से प्रॉम्प्ट के अंदर में भी हम कोई टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक प्लस तो टॉपिक प्लस हमारा जो भी नेक्स्ट जो भी चीज है उसको हमें ऐड करना है यहाँ पे। तो that we can add in this also. You can see कि we can just want to add years. We can add also something else, suppose year and birthday wishes. So इसी तरीके से ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉम्प्ट काम करता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि we will tell ChatGPT like I want ChatGPT act as professional email copywriter. So because we are going to write an email here, so that's why we are using this. Think of catchy and attention grabbing email scripts that will encourage people to click and read emails. The titles should be very short, concise, and direct. Email copies should also be creative and clever. Try to come up with this title are unexpected and surprising. Do not use titles that are too generic. My first email is about topic. So here I have mentioned the topic, but the topic I have mentioned in below of the prompt. You can see here. This is my topic. Top image generation trends to watch out for 2025. So this is my topic. And what is the formula that I am giving here? Generate 7 emails, subject lines, and email copies on the same topic above using this formula. So 5 keys to topic. The topic I have mentioned here and the year 2025. Okay. So this is the formula we have to use. So let's see what the results we will get after using this prompt. Copy this prompt, go to ChatGPT, open a new window, and just paste the prompt. And yeah, definitely it will give our outstanding results on the subject that we want. You can see it have generated 5 subjects: subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, subject 5, subject 6, subject 7. And the complete email is here. Hey there, 2025 is about to get wild for creators. The biggest image gen trends are not just cool. So if you want to write a marketing email for some of the products that you are going to sell, or you are just pitching someone for your products, then you can definitely
use these formula based prompting that will give you the outstanding results for your prompts. So, इसका बेनिफिट काफी जगह पे हम लोग कर सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर हमें करना है, and we can use in lots of sales things. We can also create some best you can see कि 7-day sequence planning for anything that we are trying to sell some products to our customers. तो उस तरीके से हम लोग पोस्ट और ये सारी चीजें भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इजीली. दिस विल हेल्प अस वेरी मच इन दैट थिंग्स.